Hello friends, welcome back to Aliya Gupta. Our topic for today is angular velocity. तो क्या होती है angular velocity? It is the rate of change of theta, where theta is angular displacement. For more details मैंने इसका tutorial बनाया हुआ है, please refer to that. या फिर you can say it is angular displacement theta per unit time, या फिर you can say it is the angle covered by a body per unit time. So it is denoted by omega, which is equal to theta by t. ठीक है, ओमेगा इज थीटा बाय टी. और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? थीटा की एसआई यूनिट रेडियंस और टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड. तो ओमेगा की एसआई यूनिट है रेडियंस पर सेकेंड या फिर रेडियंस सेकेंड माइनस 1. सो ये होती है रेडियन की एसआई यूनिट. सो अब हमें पता है ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. तो अब हम देखने वाले हैं द लिंक बिटवीन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड v, which is the linear velocity. So if I take the case of a circle, this is the center C. पॉइंट A पे कोई खड़ा है और वो पॉइंट A से पॉइंट B पे गया. एंड दिस इज एन RKB जिसकी लेंथ है L. AC and BC are both radius, or radius I am assuming to be R. The angular displacement, this angle ACB, is, let's assume, is theta. So we know L by R is theta radians. So L must be equal to R theta. If I talk about V is L by T, because L is the distance and T is the time, right? L की जगह मैं डाल सकती हूँ R theta by T. So theta by T is omega. So V is equal to R omega. And this is the link between initial and angular velocity omega and linear speed V. So for instance in a question you might be said कि okay एक string थी और स्ट्रिंग से हमने एक स्टोन टाई कर दिया और वो स्टोन हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं. स्टोन हमने जो स्ट्रिंग ली थी उसकी लेंथ इतनी थी, है ना. लेट्स से उसको कुछ हमने वैल्यू दी थी x. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वाज लेट्स से x. एंड देन दे से कि ओके इट्स angular velocity was y. So you tell us the linear speed v. So v will be very simple. V is equal to xy because it is equal to R omega. So that was all for today's tutorial. I hope the concept of angular velocity is clear. It is a rate of change of theta or angular displacement, or you can say it is the angular displacement theta per unit time. या फिर it is the angle covered by a body or per unit time. So it is denoted by omega, which is theta by t. So SI unit is radian per second. So you can write it either like this or like this. ठीक है. रेडियन पे मैंने अलग ट्यूटोरियल बनाया हुआ है वैसे, बट जस्ट यू शुड नो रेडियन को हम ऐसे लिखते हैं. एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, है ना, विच इज 180 बाय पाई डिग्रीज. सो देन हमने देखा लिंक बिटवीन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड v linear speed. So L by R is theta, so L is R theta. So V is L by T, यहाँ R theta by T, so V is R omega. So that was all for today's tutorial. Goodbye. Thanks for watching.